वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्यूअर्स। आज की ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर MCQ सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम एंग्लो सैक्सन और रेनेसांस एज के MCQs अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके टेस्ट के लिए। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एज या फिर एलिज़ाबेथन एज को कवर करेंगे। ये एज लिटरेचर में बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है, इसे गोल्डन एज माना जाता है। इसी वजह से इसके क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? ए 152, बी 153, सी 154 और डी 155। द करेक्ट आंसर इज 154। शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स ही लिखे। सेकंड, टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonais? The options are A. Queen Elizabeth, B. James I, C. Earl of Southampton or D. Ben Jonson. The correct answer is C. Earl of Southampton. Third, who has written tales from Shakespeare? A. John Clare, B. Charles Lamb, C. Samuel Rogers or D. Thomas Love Peacock. And the correct answer is B. Charles Lamb. Fourth, the phrase "what's in a name" occurs in A. Othello, B. Hamlet, C. Romeo and Juliet or D. Julius Caesar. And the correct answer is C. Romeo and Juliet. Fifth, who has written the critical book Characters of Shakespeare's Plays? A. Addison, B. Coleridge, C. Hazlitt or D. Arnold. And the correct answer is C. Hazlitt. Sixth, what is Rape of Lucrece? Options A. a sonnet, B. a narrative poem, C. an early comedy or D. a scene in Coriolanus. And the correct answer is B. a narrative poem. Seventh, in which year were Shakespeare's sonnet published? A. 1598, B. 1600, C. 1609 or D. 1616. The correct answer is C. 1609. 8. Life is a tale told by an idiot is uttered by A. Hamlet, B. Othello, C. Lear or D. Macbeth. And the correct answer is D. Macbeth. 9th, who said that Shakespeare knew little Latin and less Greek? And the options are A. Marlowe, B. Ben Jonson, C. Samuel Johnson or D. Dryden. And the correct answer is B. Ben Jonson. 10th, which of the following was the last play written by Shakespeare? A. Hamlet, B. Twelfth Night, C. Winter's Tale or the D. Tempest. The correct answer is D. Tempest. 11th, Shakespeare's Roman plays are based on which of the following sources? A. Norse Plutarch, B. Holinshed's Chronicles, C. The Palace of Pleasures or D. Ancient Tales. And the correct answer is Norse Plutarch. 12th, who among the following called Hamlet an artistic failure? A. T.S. Eliot, B. C.S. Lewis, C. Ernest Jones or D. Cleanth Brooks. The correct answer is A. T.S. Eliot. 13th, Shakespeare's English history plays are based on which of the following sources? A. Norse Plutarch, B. Holinshed's Chronicles, C. The Palace of Pleasure or D. Ancient Tales. The correct answer is B. Holinshed's Chronicles.
14th. Shakespeare addressed his sonnet to a male named A. Mr. W.H., B. Marlowe, C. Mr. H.W. or D. Dark Gentleman. And the correct answer is A. Mr. W.H. 14th. In which of the following tragedies of Shakespeare is there the role of a ghost? A. Othello, B. Hamlet, C. Macbeth, D. King Lear. And the correct answer is Hamlet. 16th. Who is the hero of Spenser's Fairy Queen? A. Morpheus, B. Phoebus, C. King Arthur or D. Archimago. The correct answer is C. King Arthur. 17. Who calls Spenser the poet's poet? A. Sidney, B. Hazlitt, C. Charles Lamb or D. Matthew Arnold. And the correct answer is C. Charles Lamb. 18th. To whom does Shakespeare dedicate his Shepherd's Calendar? A. Sir Walter Raleigh, B. Queen Elizabeth, C. Prince Arthur or D. Sir Philip Sidney. And the correct answer is D. Sir Philip Sidney. 19th. Sidney's Arcadia is similar to A. Spenser's Epithalamion, B. Shakespeare's Cymbeline, C. Moore's Utopia or D. Dryden's Poly-Olbion. And the correct answer is Moore's Utopia. 20th. The Total Miscellany was published in A. 1514, B. 1547, C. 1557 or D. 1575. And the correct answer is C. 1557. 21. Who introduced blank verse in English poetry? Options A. Marlowe, B. Surrey, D. Shakespeare or D. Wyatt. And the correct answer is B. Surrey. याद रखिएगा कि ब्लैंक वर्स सबसे पहले अर्ल ऑफ सूरे ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश लिटरेचर में. 22nd. The Spenserian stanza consists of A. 6 lines, B. 7 lines, C. 8 lines or D. 9 lines. The correct answer is D. 9 lines. Spenserian stanza में 9 लाइनें होती हैं. 23rd. Elizabethan Age in English literature covers the period of A. 1557 to 1600, B. 1558 to 1603, C. 1558 to 1606 or D. 1557 to 1599. And the correct answer is B. 1558 to 1603. 1603 में एलिज़ाबेथ क्वीन की डेथ हो जाती है और उसी वक्त ये एज जो है ख़त्म हो जाती है, तो ये डेट आप याद रखिएगा. 24th. Astrophel and Stella is A. a tragedy by Shakespeare, B. an epic by Spenser, C. a tragic by Marlowe or D. a sonnet-squence by Sidney. The correct answer is D. a sonnet-squence by Sidney. 25th. Which of the following plays of Marlowe is based on German legend? A. Tamburlaine The Great, B. The Jew of Malta, C. Edward II or D. Dr. Faustus. And the correct answer is D. Dr. Faustus. 26th. The Marlowean hero is known for his hunger for A. Gold, B. Power, C. Knowledge or D. Peace. And the correct answer is B. Power. 27th. Which is believed to be the first important revenge tragedy? A. Gorboduc, B. Hamlet, C. Tamburlaine
और डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहली ट्रेजेडी जो है वो गॉर्बूडक है, लेकिन रिवेंज ट्रेजेडी जो है वो द स्पेनिश ट्रेजेडी है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। 28 वुमेन बीवेयर वुमेन इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस बाय ए थॉमस मिडलटन, सी बी जॉर्ज चैपमैन, सी मार्स्टन और डी थॉमस टेकर। And the correct answer is A. Thomas Middleton. 29th. Who completed Hero and Leander started by Christopher Marlowe? A. Thomas Kidd, B. Thomas Middleton, C. George Chapman और D. Robert Burton। तो इसका करेक्ट आंसर है C. जॉर्ज चैपमैन। ये जो बुक थी हीरो एंड लिंडर, ये क्रिस्टोफर मार्लो की थी जो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसे कंप्लीट किया था सी जॉर्ज चैपमैन में। लास्ट 30 द चीफ फंक्शन ऑफ अ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट। हु सेड इट? ए जॉन ड्राइडन, बी सर फिलिप सिडनी, सी फ्रांसिस बेकन और डी बेन जॉनसन। और करेक्ट आंसर है इसका डी बेन जॉनसन। उन्होंने ये लाइन कही थी जो लिटरेचर में बहुत ही फेमस लाइन है। तो ये क्वेश्चंस होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके टेस्ट के लिए और आपकी नॉलेज के लिए। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।